Hello everyone. Good evening. Welcome to prepguruu, the online. Hello everyone. Welcome to prepguruu, the online platform for CUET examination. Today I will discuss the second part of tone. In the first part, we have discussed what? We have discussed the broader in tone. One, tone based questions. First of all, tell me, am I audible to all of you or not? Am I audible? Am I audible to all of you? Okay. Now, I have discussed with you in the previous session that tone may be asked in three ways. Means tone of the whole passage, tone of certain paragraph, or tone of the author towards certain entity, right? Whenever you are going to pick the tone, always try to find out the tone within the given answer choice, within the range of given options. Don't think very broad, means it will confuse you, right? Don't be confused. Always think within the given answer choices, right? Now, if I talk about tone can broadly be classified into three elements, means positive, negative, and neutral, right? So, आज मैं पहले आपको कुछ negative tones लिखवाना चाहता हूँ. Why? Because they are very important in terms of what? Getting questions, right? So you have to study the tones based on the themes. Means negative should be learned at first, right? So first of all, we will discuss certain tones, negative tones, their meanings, and then we will go through the questions, right? Now have a look over the things. In the previous lecture, we have discussed what is tone. It is attitude of the author, and we have discussed what? Narrative descriptive. Narrative descriptive is what? Neutral tone. Jovial, jocular, humorous is what? Positive tone. Sarcastic is what? It is a negative tone. And critical and cynical are always negative. No. Nostalgic is what? Positive, means remembering good old days. And if I say acerbic, harsh, severe, bitter, caustic, vitriolic, these are related to what? Criticism, negative. Angry or indignant is what? Negative. Indignant is what? When you are feeling that injustice has been done to you and then you are angry, that it would be what? Indignant. Apologetic, feeling sorry. Belligerent, bellicose, ready to fight, warlike intentions, negative. Biased, negative. Commiserating, what? It is what? Neutral. When you want to show, express pain or sensitivity of man, right? Condescending or patronizing is what? Negative. Next is what? Persuasive. Persuasive is again neutral tone. You can persuade or convince someone according to your own thought. It would be negative or positive, right? Now, confrontational is what? When you are aggressive or hostile in behavior, it is what? It is negative. Now, if I talk about satire is what? Neutral. Satire is done with some sort of expectation from others. Now, next is irony. Irony was what? I told you irony is case specific, and in the same manner, paradox. Paradox is what? Broad, applicable to majority. This is the main difference between irony and paradox. Now, if you see this one, let's see tone, negative tone, right? Now, these are the list of negative words, right, which you must learn, right? So I am telling you the meanings of certain tones. Kindly write it in your notebooks, right? The first one is what? Melancholic. Melancholic is what? Melancholic is like extremely sad, very much depressed. Means sad is a normal word. Now, melancholic is having higher intensity, right? So write down under melancholy, feeling or
expressing extreme sadness, right? Now the second word is what? Despondent. What is the meaning of despondent? Showing extreme discouragement. When you are discouraged, means when you are demotivated with anything, then it is what? It is despondent. So despondent can be related to what? Discouraged. So despondent को discouraged से आप याद रखना, right? Now pessimistic. Being pessimistic is what? Always have a negative thought in each and everything. Suppose मैं कोई positive element भी discuss कर रहा हूँ. Suppose I am talking about a normal debate, or you can say normal thing about population. You are creating what? Negative kind of thing. Irony and paradox. Yes, obviously it is considered neutral. Why? Because it can include what? Positive and negative elements both. मैंने irony और paradox में क्या बताया कि you will get two contradictory statements, two contradictory words in the same sentence. तो मैंने कहा I have to be cruel to be kind to you. तो it is the example of paradox. तो cruel और kind एक ही sentence में है, तो it is what? Neutral. ठीक है? तो irony और paradox should be in neutral tone, right? Now इसका लिखा melancholic is what? Extremely sad. And despondent is what? Despondent is discouraged, feeling discouraged. Pessimistic means what? Having negative thoughts. Having negative thoughts. Negative mentality का जो person होता है, that is what? That is pessimistic thought. Censorious. Write down. It is again negative. Censorious means severely critical of others. Means if you are criticize others, so it is what? Severe means it's high in intensity. जैसे sadness की intensity ज्यादा करने वाला word क्या है? Melancholic. उसी तरह से censorious is what? It is extreme case of critical tone, right? Severely critical of others. Irreverent means what? Not suitable, right? Means if you say disrespectful. इसके लिए एक word बहुत बढ़िया है. You can write down disdainful, right? Disdainful is the same as irreverent. Means disrespectful means you are not showing respect to others, right? ठीक है? Wry is what? Write down. Just write down. Wry, ironic or twist in the sentence or paragraph. When you show twist in your story or statement, it is what? It is wry. दूसरा एक चीज और बोल सकते हो राय को, grimly humorous means in a depressing manner you are creating humor, in a depressing manner, right? It is what? It is wry. Now quarrelsome is what? जो मैंने belligerent और bellicose बताया था, same meaning is that, warlike intentions, negative. Depressed is very common word in terms of tones. Depressed बहुत ही common है. मतलब you might get this word, this की possibility ज़्यादा melancholic की as compared to depressed, right? Fearful is very again common. Insulting is common word. Belligerent is what? Warlike intentions. Quarrelsome, right? Hopeless, who is not having hope. Next is what? Condemnatory. Condemned means what? Condemned means what? Disapproval of something. Condemnatory means what? Disapproval of something. Disapproval, right? Cynical. Cynic मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. It is negative tone. Cynical means skeptical. Skeptical means having doubt on others. One who is having doubt on others, it is what? Cynical. Acrimonious. Acrimonious means मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी, acerbic, harsh, severe, bitter, caustic, vitriolic, उसी में ये ऐड कर लीजिएगा. Acrimonious means what? Bitter tone. Bitter, right? Critical. तो critical tone के बहुत words हैं which are coming in the form of tone based questions. Now accusing. Accuse means what? Accusing means to blame someone, right? Next is dejected. Dejected means rejected. Next is what? Somber. Write down somber. Somber means dark or dull or gloomy, right? It can be used to show sadness also, but जहां पर somber आएगा वहां पर दूसरा option sadness नहीं होगा. या उस question में among the given answer choices you will not get this kind of words. Melancholic नहीं आएगा. Somber is related to what? Dark, dull or gloomy. Dark means what? Sadness भी show कर सकते हैं, right? Gloomy means क्या होता है? Gloomy का जो literal meaning होता है वो gloom means darkness. ठीक है, तो when you show darkness in your writings, feelings,
means what? Sad. Obnoxious. Obnoxious means what? Very weird. Weird. देखने में भद्दा, घिनौना लगने वाला. That is what? Obnoxious. Derogatory. Derogatory is what? Again, showing disrespect. Derogatory response means what? Not showing respect. Disrespect. 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 Derogatory. Now the next one is what? Pessimistic. Pessimistic is same, right? Negative thoughts. Aggravated. Aggravated means what? To make something more serious. To make something more serious, right? किसी की severity या intensity बढ़ा देना. That is not known as what? Aggravated. Diabolic. Diabolic means what? Dia से याद रखना. Characteristics of what? Devil. Characteristics of devil. Characteristics of devil. Diabolic. All these are negatives. Disturbed, बहुत ही common word है. Disturbed means what? Not comfortable. Next is what? Disgusting. Disgusting is very common word. When you are fed up with the things, right? Then you will use this word. Disgusting, right? Selfish. Again, a very common word. Selfish means what? Self-oriented, right? Contemptuous. Write down contemptuous. Meaning of contemptuous is disrespectful. Means disrespect के लिए आपके पास कौन कौन से words हैं? Derogatory and contemptuous means not showing respect, right? Now agitated. Agitated is what? To increase the intensity, right? Next, demanding. यहाँ पर note मत करना. I have made star also. Demanding is what? ये कभी negative हो जाता है कभी positive, तो इसको add मत करना, right? Demanding means what? If the situation is demanding any negative thing, ठीक है? Demand अगर negative होगी तो it would be what? Negative. तो इसको इस list में add ही मत करो. Mournful is what? Again, जैसे मैंने बोला cry. Cry is a normal thing, means लोग रो रहे हैं या रो रहे हैं. Someone is emotional, but mournful is what? Extreme cry. Extreme cry means what? Means आप चीख रहे हो, रो रहे हो. किसी के डेथ पर जो रोते हैं ना, रोते हैं, उसको बोला जाता है mournful, right? Indignant मैं आपको बता चुका हूँ. You are angry because of what? Injustice. Despairing, horror, irritated, disliking, ominous. These are very common, right? Ominous के लिए आप चाहो तो लिख सकते हो threatening. Ominous means what? Threatening, डराने वाला, right? Something which is what? Threatening, ominous, right? Next is what? Next is surly. Surly का लिख लो. Surly means bad tempered. Bad tempered, one who is not of good temperament means bad tempered, जल्दी गुस्सा आने वाला, right? उस bad tempered person क्या बोलते हैं? Surly. Desolate means what? To separate. Next is what? Facious. What is the meaning of facious? Write down facious. Facious, write down. Sometimes what happens? You are representing very serious issues in a very inappropriate way, right? तो इसको एक लाइन में लिखो. To represent serious issues in illogical manner. To represent serious issues in illogical manner. Wrong way of representing the serious things. Enraged, बहुत गुस्सा होना. Skeptical, again, skeptical और cynical are same. ठीक है? शक करना. ठीक है? तो cynical and skeptical are same. Now, impetuous, condemn and ridicule. Ridicule is very common. Ridiculous, किसी का हंसी उड़ाना, मजाक बनाना, right? ठीक है? Now, it is what? Now these are the list of your what? Negative tones. तो negative tones को ये जितनी यहाँ पर आपने लिखी है, right? ठीक है? This is important. Now let's do some sort of questions. So let's see questions कैसे करते हैं. These are the list of words which are important in terms of what? Negative tones. Now let's see the questions.
तो हो चुका था. Now, just read this first. Just read this. Is it visible to all of you clearly? Okay. Just read this. Take your time and read this, and then I will discuss the things, and then we will see the options for tone, right? Just read this. Done with reading? Done with reading, all of you? Read कर लिया? Okay, okay, good, Khushvinder. Now, let's see. During the 1960s and 1970s, the primary economic development strategy of local governments in the United States was to attract manufacturing industries. Now, what was the primary goal of economic development strategy? Means what? To attract manufacturing industries. Suppose if we focus on the strategies which are discussed, which have been discussed in this passage, are what? Let's see. To attract manufacturing industries, right? This was the strategy. उसमें उन्होंने क्या किया? Unfortunately, this strategy was usually implemented at another community's expense. Now, what does it mean? Another community's expense. See how it describes. He is saying that one area is getting benefited at the cost of another. Means एक का loss हुआ, then दूसरे का profit हुआ. This was the case. Many manufacturing facilities were lured away. Lured away means what? वहां से ले गई from their moorings. Moorings means what? Base. Moorings की literal meaning क्या होती है? जहां पर ships को हम stand कराते हैं. Ships का जहां पर stand है. But the thing is, यहाँ पर contextual meaning क्या होगी? It would be what? Bases. So people are moving away from their basic cities, basic nations, basic regions, and going elsewhere through tax incentives and slick promotional efforts. Slick means very common stereotypes, right? Through the transfer of jobs and related revenues that resulted from this practice, one town's triumph could become another town's tragedy. Means what? देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या किया कि इकोनॉमिक स्टडीज में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया. तो आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मान लो कहीं पर प्लांट किया, राइट? सो उस प्लेस पर तो डेवलपमेंट हो गया, बट पीपल आर कमिंग टू वर्क देयर फ्रॉम आउटसाइड रीजन्स. तो जिस एरिया से वो आ रहे हैं, राइट, जिस एरिया से वो आ रहे हैं, उस एरिया में क्या हो गया? उस एरिया से अच्छे टैलेंटेड पर्संस की कमी हो गई, राइट? एंड दे आर ग्रोइंग इन अनदर एरिया. तो अनदर एरिया ग्रो कर रही है एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? देयर बेसिस, एट द कॉस्ट ऑफ देयर एरिया. तो उनके रीजन्स क्या हो जाएंगे? डेवलप नहीं होंगे, ठीक है, अनडेवलप्ड हो जाएंगे. तो वन एरिया इज व्हाट? इन द कंडीशन ऑफ व्हाट? ट्रायम्फ. एंड अनदर टाउन्स ट्रेजेडी इज व्हाट? पीपल आर गोइंग फ्रॉम दैट रीजन. तो सपोज आप क्या करते हो, जैसे एक मेट्रो सिटी है, वहां पर वेरियस एरियाज से, वेरियस रूरल एरियाज से या सेमी रूरल एरियाज से लोग जाते हैं, जॉब करते हैं, एस्टेब्लिश होते हैं. तो किस एरिया का डेवलपमेंट होता है? दैट मेट्रो सिटी. और जो उसके अपार्ट वो जो बाकी सिटीज जहां से वो आते हैं, वो तो एम्प्टी होती चली जा रही है ना, राइट? तो इन दैट कंटेक्स्ट इट वाज व्हाट? दिस स्ट्रेटजी वाज नॉट गुड, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवरऑल नहीं हो पा रहा था, राइट? नाउ second paragraph, in the 1980s the strategy shifted from this zero sum game to one called high technology development. Now what? Zero sum game means what? Profit loss कुछ नहीं हो रहा है, तो it is what? It is zero sum game, right? ऊपर वाली कंडीशन में, क्योंकि एक का ट्रेजेडी दूसरे का ट्रायम्फ था. Now what? यहां पर अब मूव किया क्या? हाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. Now they were going to technically develop their society. Now what? In which local governments competed, attract newly formed high technology manufacturing firms. Now, although this approach was preferable to victimizing other geographical areas by taking their jobs. Now, what? This is the negative point. Technology high ho gayi, then what? It was what?
It was eating jobs, means jobs were not there. Unemployment was increasing. It also had its shortcomings. High-tech manufacturing firms employ only a specially trained fraction of the manufacturing workforce. Means only special workforce has been established or employed in this area. Okay? And there simply are not enough high-tech firms to satisfy all geographic areas. तो इतनी high-tech firms हर जगह नहीं खोली गई कि all geographical areas develop हो सके. So अगर मैं एक area develop करूं at the cost of another area, तो मैं development कर ही ना रहा हूं. So these strategies were not good according to the author, right? Now see the next paragraph. Recently, local governments have increasingly come to recognize the advantages of yet a third strategy. Now, what is the third strategy? See, first one was to attract manufacturing industries. Second one was high-tech technology. Third is what? The promotion of homegrown small businesses. The promotion of homegrown small businesses. अब जैसे इसका क्या कहना है कि people don't have to go anywhere else, right? They have to start any venture or business in their own area, in their own region. हाँ, this was the good strategy. Why? Because people will grow if they grow. If they are growing or developing their ventures, तो वो अपने regions में ही कर रहे हैं, तो हर region क्या हो रहा है? Develop हो रहा है. They are not going elsewhere. That's why this strategy was good as compared to the above two. See, small indigenous businesses are created by a nearly ubiquitous means omnipresent resource. Local entrepreneurs means what? One who starts his own venture with roots in their communities. These individuals are less likely to be enticed. Enticed means what? To be attracted away by incentives offered by another community. तो ये दूसरे offers by other community से ये attract नहीं होने वाले थे. इन लोगों का नेचर क्या था? They were local entrepreneurs. तो वो अपना region छोड़कर नहीं जाने वाले थे, right? And that was the main reason for what? The good strategy. Indigenous industry and talent are kept at home. मतलब जो talent है वो कहीं अपने region से बाहर नहीं जा रहा है, वहीं पर रह रहा है. Creating an environment that both provides what? Jobs and fosters further entrepreneurship. Means jobs मिल रही हैं और entrepreneurship भी encourage हो रहा है. Now, if you see the paragraph, the first two shortcomings are there. Means first two strategies are fail according to the author. They are not giving you benefit. But the third strategy is what? It is a good. Why? Because it is encouraging, promoting the local entrepreneurs. Right? Now, let's see the questions. See the questions. Number one, the primary purpose of the passage is to. What could be the answer? What could be the answer? Question number one is, the primary purpose of passage is to. Always go through elimination. ये ध्यान रखिएगा. Always go through elimination. If you are looking at any information which is wrong, तभी इसको cross करना. If you are having 0.1% doubt in your mind, don't make a cross, make a point. कटना होगा बाद में कट जाना. Right? Means first of all, eliminate wrong answers wise. At least two आप eliminate कर देना. And then compare the remaining options. Let's see. Number 8. Advocate more effective strategies for encouraging the development of high technology enterprises in the United States. Now what? Point or cross. Primary purpose. See, one more thing is there. Try to understand the demand of the question. This is very important. You are going to do what? Which kind of question? Primary purpose. So primary purpose should include what? The paragraph means crux of the whole paragraph. एक आंसर आया. Yes, Kushvinder. Okay. What about others? Which is the answer? Kushvinder is saying A. What about others? Harshit, Esther, Ketki, Kushvinder and Kumkum. Yes, Kushvinder तो आंसर दे दिए. बाकी what about others? Gauri, Advika. What are your answers? Question 1. The primary purpose of the passage is to. Okay, Kumkum is saying A. Gauri option E. Okay. Gauri is saying E. Any other answer? Advika is saying A. Harshit saying E. Okay. Okay, 2 persons are saying, means folks on Zoom मैं देख रहा हूँ, तो E, two students in there, बाकी are going with A. Let's see what is the correct answer. Primary purpose ढूंढना है, which is what? Which demands the crux of the passage. Now see, advocate
more effective strategies for encouraging the development of high technology enterprise in the United States. This is true, but this is what? This is partial. ये partial answer है ना? It is covering only what? The high technology part, which is discussed in the second paragraph. Which is discussed in the second paragraph. Primary purpose ढूंढ रहे हो तो आपको पूरे paragraph का cluster चाहिए ना, right? So it cannot be the answer. आप initially अगर point बनाया है तो मैं point बना ले रहा हूँ because it is not wrong. Wrong तो नहीं है, but it is covering only the half portion of the paragraph, right? Now if you see the B1, contrast the incentives for economic. देखिए आप starting में भले ही पार्शियल हो, आप स्टार्टिंग में उस ऑप्शन पर क्या बनाएंगे? यू विल मेक अ पॉइंट ओवर इट. व्हाई? कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस के ऑप्शन डिजाइन होते हैं कि बहुत अच्छा कोई नहीं होता है, तो वी हैव टू गो विद द रिमेनिंग आंसर चॉइस व्हिच इज करेक्ट, राइट? तो इसलिए इनिशियली मैंने इस पर पॉइंट बना लिया. लेट्स सी बी. कंट्रास्ट द इंसेंटिव्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफर्ड बाय लोकल गवर्नमेंट्स विद दोज ऑफर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर और लोकल गवर्नमेंट का कोई कंपैरिजन है यहाँ पर? नो, दिस इज रॉन्ग. यहाँ ये मेंशन ही नहीं, आउट ऑफ स्कोप, अननोन, राइट? बी इज गॉन. एक्नॉलेज एंड काउंटर एडवर्स क्रिटिसिज्म ऑफ प्रोग्राम्स बीइंग यूज्ड टू स्टिमुलेट लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नो काउंटर एडवर्स क्रिटिसिज्म, इट वाज नॉट देयर इन द पैसेज. Define and explore promotional efforts used by local governments to attract new industry. Now, to attract new industry is what? Again partial. ठीक है, मुझे ऐसा ढूंढना है जिसमें we have to see that analysis part was being done by the author of various strategies, right? Now, तो ये भी क्या हो जाएगा? It is again what? Partial. Review and evaluate strategies and programs. Review and evaluate strategies. ये first part में ही इससे तो strong हो जाता है. If you compare this one A with option E, this is more strong. Review and evaluate strategies and programs that have been used to stimulate, means attract economic development. Now what? This is covering the whole passage. This is covering the whole passage. So the correct answer is what? E, not A. Clear? E is the right answer. Very good, Harshit. Very good, Gauri. Right? The people with A. ध्यान से सुनो, जिन लोगों ने भी A को opt किया था as an answer, E को cross नहीं कर पाए होगे. Am I right? Say yes or no in the chat box. E को cross कर दिया था. Initially, when you're going with the through the elimination process, E cross हो गया था या point बना हुआ था? Tell me. E was considered or not? पॉइंट बना था. वेरी गुड खुशविंदर. ठीक है, तो जैसे अगर आपने इसको क्रॉस नहीं किया था तो इट इज अ गुड केस. व्हाई? बिकॉज गेम यही है कि यू हैव टू कंपेयर द रिमेनिंग ऑप्शंस. इफ यू आर रीडिंग ए, सपोज आपने ये एलिमिनेट कर दिया, राइट? ठीक है, नाउ यू आर रीडिंग ए एंड ई. तो व्हेन यू आर रीडिंग ए, keep in mind the contents of E, and when you are reading E, keep in mind the contents of A. तब आपको बेटर आंसर पता लग जाएगा, राइट? एंड इट इज ऑब्वियसली बेटर. व्हाई? बिकॉज इट इज डिस्कसिंग ओनली अबाउट द हाई टेक्नोलॉजी पार्ट व्हिच इज डिस्कस्ड इन द सेकंड पैराग्राफ, एंड इट इज कवरिंग व्हाट? 3 पैराग्राफ्स. रिव्यू एंड इवैल्यूएट स्ट्रेटजीज, all those 3 strategies, right? Now see the next question, number 2. So answer number 1 is what? E. 2. The tone of the passage suggests that the author is most optimistic about the economic development potential of which of the following groups? Author किसका फेवर कर रहा था? Means author का पूछा है कि who, means according to the author किसको लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक था? yes केतकी. Okay, C. Let's see the answer. Yes, very good answer, Ketki Gauri. Very good. C is the correct answer. He was focusing on what? He was focusing on what? Local entrepreneurs. And this is beneficial according to the author's viewpoint. Means he was giving the reasons also कि people are not going anywhere else. They are developing their regions only, right? And they are not enticed by the other promotional or other attractive offers, right? Very good answer. Very good. The correct answer is what? C. Right? Now let's see the other case. Can you tell me the tone used in this particular passage? ठीक है, सबसे पहले मुझे एक चीज बता देना. This paragraph is positive, negative or neutral? पहले ये बता देना, then tell me the answer. Positive, negative or neutral? Read this paragraph. Positive, negative or neutral? Just tell me.
न्यूट्रल, हाउ? न्यूट्रल की क्या क्वालिटी बताई मैंने? Positive and negative, both elements are discussed in the paragraph. So how it is neutral? What is the negative point here discussed in the passage? Gauri, which is the negative point? इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या हुआ? नेगेटिव इन्फ्लुएंस कहां से मिल रहा है आपको? फ्रॉम वेयर, विच पॉइंट डू यू गेट द नेगेटिव सेंस? Tofu is not better than palak paneer. Tofu is not better than palak paneer. Okay, okay. It is saying no, you can replace it with tofu. Okay, he's saying, but did you think you would have to give up your favorite palak paneer if you quit paneer? No, you can replace it with tofu. Author is saying you can replace it with tofu. So if I say, let's read this passage first. सबका आंसर क्या है? Can you tell me the answer? गौरी, न्यूट्रल तुमने बिल्कुल सही कैटेगरी बताई है, बट कैन यू टेल मी द आंसर? सी, कितकी, if any tone based, see, if any passage is neutral in its tone, अगर न्यूट्रल है तो पॉजिटिव और नेगेटिव कट जाएंगे ना. जैसे मैंने क्या बताया था कि टोन तीन ही कैटेगरीज में क्लासिफाई होते हैं. वन इज व्हाट? पॉजिटिव, सेकंड वन इज व्हाट? नेगेटिव, एंड द थर्ड वन इज व्हाट? न्यूट्रल. ठीक है. न्यूट्रल हम टोन तब लगाएंगे जब व्हेन वी आर गेटिंग व्हाट? पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट्स बोथ इन द सेम पैराग्राफ, राइट? तो अगर मान लीजिए आपको न्यूट्रल लगा है कि पैराग्राफ न्यूट्रल है, तो ये एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम पॉजिटिव कट जाएंगे ना, तो कोई न्यूट्रल ही आंसर होगा. तो इफ यू आर पिकिंग अप ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक इज प्योर पॉजिटिव, पॉजिटिव टोन है ना ये, और मैंने पिक किया है न्यूट्रल, तो पॉजिटिव कैसे आंसर हो जाएगा? जस्ट थिंक अबाउट दिस, राइट? ठीक है, ओके, गुड. हाँ, गुड केतकी. Persuasive is the right answer. Why? Because persuasive is what? Neutral. Persuade means what? You try to convince the reader according to your justifications or thought, right? Let's read this. Being a complete health food, tofu has a lot of antioxidants content, right? Tofu. The author is praising the qualities of what? Tofu has a lot of antioxidant content and it keeps your body healthy and disease free. But did you think you would have to give up your favorite palak paneer if you quit paneer? No, you can replace it with tofu. If that has not convinced you, no. ये पॉइंट क्या शो कर रहा है कि ऑथर इज ट्राइंग टू कन्विंस यू दैट यू मस्ट ईट और यू शुड ट्राई व्हाट? टोफू, राइट? यू टू टेक अप टोफू इन योर डाइट. अगर आपको मेरे इन पॉइंट्स ने कन्विंस नहीं किया टू टेक टोफू, let's see this one. We have got something else coming your way. Regular tofu consumption also prevents various types of cancer. अब ये इतना dangerous word है cancer कि किसी को आप बोल दो कि if you eat tofu, तो it will try to what? Remove or it will prevent you from several kinds of cancer. तो आप हाँ हो सकता है कंसिडर करने लगो. Now it can't get any better than this. इससे ज्यादा अच्छा नहीं बता सकता था मैं. If you have designed your very own tofu recipe, don't forget to share it with us. So author is trying to convince you to take tofu. ठीक है, तो क्या होगा? Yes, persuasive is the right answer. तो मैं ये बताना चाह रहा था, if you can pick this category, तो you can eliminate the options easily. देखो, आपने न्यूट्रल टोन डिसाइड की थी. देखो, factual is what? Neutral. इस पर मान लो तुमने पॉइंट बना लिया. Be persuasive is neutral. ऑप्टिमिस्टिक और कंडेमनिंग ये दोनों तो कट जाएंगे ना, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. बचा क्या? परसुएसिव एंड फैक्चुअल. फैक्चुअल ये है नहीं. व्हाई? बिकॉज ऑथर्स थॉट जिसमें भी आ जाए वो फैक्चुअल नहीं होता है. फैक्चुअल मींस व्हाट? ओनली फैक्ट्स एंड फिगर्स, नो ऑथर्स व्यू. नो ऑथर्स व्यू लिख लीजिएगा इसमें. फैक्चुअल टोन जब भी आएगी, नो ऑथर्स व्यू. ऑथर टोन अपने व्यूज डाल ही नहीं सकता. तो बेसिकली ऑल साइंटिफिक और टेक्निकल पैसेजेस कम अंडर दिस टोन, फैक्चुअल और एक्सपोजिटरी. ठीक है, याद रखना. तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? बी, परसुएसिव. नाउ लेट्स सी दिस. For aboriginal people like us, land is much more than a place. Our rocks, trees, rivers, hills. अब मुझे पहले ब्रॉड कैटेगरी बताइएगा, then tell me the answer. अच्छा, टोफू क्या होता है हर्षित? Okay, tofu is like
Tofu is a variant. Apparently, it looks like what? Paneer. It looks like paneer in appearance, right? Apparently, it looks like paneer, and it has more what? Proteins. What he was telling in his writings. ठीक है, antioxidant है ये, ठीक है, तो it is a substitute for what? Paneer, you can say. Some people have tried also tofu. ठीक है, तो the thing is, the people usually eat what? Paneer, but tofu is a new variant, means substitute, right? Now, for अब मुझे ये बताइएगा सीधे सीधे, it is positive. Wait a minute. It is positive, नेगेटिव और न्यूट्रल. आप ये पहले डिसाइड करके बता दिया करिए, राइट? देन डिस्कस द ऑप्शंस. दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल. वेरी गुड केतकी, इट इज पॉजिटिव. वेरी गुड. ही इज ऑथर इज प्रेजिंग व्हाट? हिज मदरलैंड. ठीक है, ये लिखा ना, इट इज आवर मदर, मींस फॉर एबोरिजिनल पीपल लाइक अस लैंड इज मच मोर देन अ प्लेस. ही इज प्रेजिंग द क्वालिटीज ऑफ लैंड, nature, our rocks, trees, rivers, hills, animals, humans, all are a way for us to connect with our ancestors. ठीक है, अपने जो है we love, need and care for our land, and our land loves, needs and cares for its people in turn. Means what? We love our nature and in turn nature loves us. ठीक है, यही बताया है, तो it is what? Positive. अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव एंड न्यूट्रल गॉन. Now let's see the option. Complex किस कैटेगरी में आएगा? Complex is what? Negative है तो इसको क्रॉस करोगे. Reverent is what? Reverent means respectful. Positive है, पॉइंट बना लिया. Straight forward is what? Neutral. Straight forward क्या होता है? Neutral. Blunt बोल देना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? It is what? Gone. Sympathetic is again neutral. This is gone. Which is the remaining option? Reverent. Reverent means होता है respectful. ये लिख लीजिएगा. Yes, हर्षित, यू कैन से, राइट? ठीक है, तो जितनी भी चीजें पढ़ना, ध्यान से पढ़ना. when we are considering the tones, जब भी मैं पैसेज पढ़ूं तो उसमें क्या होगा? we have to see three things: positive, negative और neutral. ठीक, इन three things में आपने अगर जो भी डिसाइड किया तो अदर टू कट जाएंगे. क्लियर है? ये समझ में आया? ठीक है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट पैसेज. Let's read this first. इसको रीड करके टेल मी द ब्रॉड कैटेगरी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल. पहले ये बताइएगा सभी लोग, राइट? रीड दिस पैसेज. Is it positive or negative or neutral? Okay, it is positive. It is positive. How it is positive? If you read this passage, ध्यान से सुनना, ठीक है? जैसे ये चीज अगर आपने ब्रॉडर कैटेगरी सही पिक की है तो आपका टोन्स का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा. बिलीव मी, टोन्स कम्स अंडर द डायरेक्ट लेवल कैटेगरी ऑफ आरसी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में डायरेक्ट लेवल क्वेश्चंस में आता है. मींस व्हेन यू सी द वर्ड्स ऑफ टोन्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज यू हैव टू आंसर. ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, the recent news that local hospitals have had to reroute seriously ill patients because the community's critical care beds are full is worrisome. First line ही क्या बता रही है author? What is it? It is positive.
वरीसम क्या है, जैसे आप वर्ड्स पिक किया करो, जैसे ऑथर ने क्या बोला कि इट इज व्हाट वरीसम, क्या कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, ठीक है, दे कैन नॉट अकोमोडेट द इल पेशेंट्स, ठीक है, तो उनको रीरूट करना पड़ रहा है। अर्लियर दिस वीक 4 ऑफ द 6 लोकल हॉस्पिटल्स रैन आउट ऑफ स्पेस, 6 में से 4 क्या है, रैन आउट ऑफ स्पेस फॉर द क्रिटिकली इल एंड हैड टू टर्न पीपल अवे, उन्हें पीपल को हटाना पड़ा वहां से, मींस एडमिट नहीं कर पाए हॉस्पिटल्स। तो दिस इज शोइंग व्हाट नेगेटिव, दिस इज शोइंग व्हाट द नेगेटिव एस्पेक्ट, ठीक है, ऑथर इज हाँ शोइंग द नेगेटिव टोन। लेट्स चेक अदर आगे क्या कहता है, अगर कुछ पॉजिटिव हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, राइट, ठीक है, बट अगर वो नेगेटिविटी कंटिन्यू रखा तो टोन विड बी व्हाट नेगेटिव, ठीक है। लेट्स सी, federal law requires hospitals to treat anyone who walks in as a result of having to treat large numbers of uninsured patients. The emergency rooms often become an economic drain. अभी economic drain क्यों बोला उसने? Emergency rooms uninsured patients के लिए क्या था, uninsured patients के लिए जगह थी, ठीक है, and means कह रहा ना कि ट्रीटमेंट उनका ज्यादा हो रहा था who are uninsured. Uninsured means what, जो पैसे ज्यादा देंगे, राइट। तो ऑथर इज व्हाट एंग्री इन हिज टोन, वो टॉन्ट बोल रहा है किसको, हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट को, राइट, एंड ही इज सेइंग व्हाट जो इमरजेंसी रूम था दैट वाज व्हाट बिकम इकोनॉमिक ड्रेन ऑन देयर हॉस्पिटल्स, ठीक है। नाउ डॉक्टर्स नाउ वांट टू सेट अप देयर ओन फ्री स्टैंडिंग एम्बुलेटरी सर्जिकल फैसिलिटीज एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स। उसने भी बोला कि डॉक्टर्स अपने खुद के डायग्नोस्टिक सेंटर्स खोल लेंगे, ठीक है, दे वांट टू सेट अप देयर ओन सेंटर मींस व्हाट, वहां पर सारी फैसिलिटीज हो खुद की, राइट, तो दे वांट टू अर्न मोर प्रॉफिट। क्रिटिक्स कंटेंड दिस वुड लीव हॉस्पिटल्स विद लेस रेवेन्यू एंड द सेम नंबर ऑफ इंडिजेंट्स टू ट्रीट, ठीक है, इंडिजेंट्स टू ट्रीट, तो क्या हो जाएगा, दिस इज अगेन व्हाट नेगेटिव, ठीक है। ऑथर इज टेलिंग दैट डॉक्टर्स आल्सो वांट टू अर्न प्रॉफिट बट द इंटेंशन वाज नॉट टू सर्व द ill patients, right, ठीक है। Now a bill was recently introduced to phase out the need for a certificate of public need for non-hospital based facilities provided those facilities met stringent regulations and requirements. This would have made it easier to set up alternative facilities to help indigent patients. The finance committee balked at the hefty price and killed the bill, another casualty of a failed legislative session. Now what, he is blaming the government rules or regulations or norms also कि it is not applicable correctly, ठीक है, तो उसने इसको भी blame किया, again it is what negative. Now let's the last one, unfortunately पहले ही बोल दिया उसने unfortunately, तो ये क्या हो गया negative. The problem of access to medical care or those of limited means is not going to go away anytime soon, and despite the well-intended regulations, too full hospitals compromise everyone's welfare. Healthy competition with small neighborhood surgical and diagnostic centers may be what is necessary to help dampen rising medical costs. But under no circumstances should the hospitals be forced to care for everybody without health insurance. While competitors means क्या कह रहा है, विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस मतलब क्या है, जिनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उनको ही हॉस्पिटल को टेक केयर करना है, मींस हॉस्पिटल क्या उन्हीं को एंटरटेन करेंगे, while competitors operate free of the burden of caring for those unable to pay, ठीक है। Now what, the whole paragraph is what negative, ठीक है। If it is negative तो आप कौन से ऑप्शंस रिमूव कर लोगे, you can remove neutral and positive. Let's see the options. Now, neutral is what? Gone. Positive is what? Gone. Persuasive is neutral. Gone. Angry is negative. So answer is what? D. It would be what? The answer would be angry. Yes, very good, Harshit. It would be D. It would be D. Now, yes, good. Now let's see. Now see this one. First of all, read this, then I will tell you the meaning of these tones, right?
First of all, read this passage. Read this. डन. ओके, न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव, क्या थॉट आ रहा है? न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव. सपोज इफ आई से it is saying first I will start with astronomical spectroscopy. This is the method by which chemists identify. Now if you see any explanation which is what somewhat technical, right, somewhat technical, he is giving you a method means a new theory, right? Name in this part astronomical spectroscopy. This is the method by which chemists identify the compounds present in space when light or any electromagnetic radiation is passed through a sample. The sample absorbs and emits certain wavelengths of light better than others, and the wavelengths that are emitted and absorbed can be used as a fingerprint analysis of the chemical nature of the compound itself. Unfortunately, the science isn't as simple as I mentioned here, but will suffice for the discussion that follows. This is what? Neutral. If you are giving any kind of theory, right? Very good, Advika. If you are giving out any kind of theory, phenomenon, right? ठीक है, ये न्यूट्रल ही होते हैं. ठीक, तो क्या होगा? इट इज न्यूट्रल. और ये एक न्यू थिंग भी बता रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये होता क्या है वो भी डिटेल में डिसाइड है. ठीक है, तो डिटेल में डिस्क्राइब एक न्यू थिंग, राइट? इट इज न्यू कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो कोई न्यू कॉन्सेप्ट अगर मैं बता रहा हूं, राइट, तो इट इज व्हाट? अगर न्यू है तो ध्यान से समझना, एक ऑप्शन ऐसा है जो न्यू की डिमांड करता है, राइट? नाउ लेट्स सी द अदर पार्ट. देयर हैव बीन मेनी मीटियोर्स that have hit the earth's surface, and some of these impacts have been seen as the reason for major climate changes on earth. The interest in astronomical spectroscopy was purely to understand the physical and chemical nature of the universe around us, but as soon as astronomical spectroscopy developed into a reliable science, it stood to reason that it could lead us to understand how life on earth originated and whether there are traces of life elsewhere in the universe. Now what, after all, if life evolved on earth, the chemicals responsible for life should have been present on earth before that, and possibly elsewhere, and hence the chemical nature of these meteors became important to biology as well. But all these studies have not been localized to the meteors alone. Now what, again the scientific explanation उसी को is described here. The whole passage was technical. ठीक है, अब टेक्निकल पैसेज में देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ. ऑथर इज डिस्क्राइबिंग व्हाट. पहले ही बोला उसने कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करूंगा, मींस एस्ट्रोनॉमिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें होता क्या है, इफेक्ट क्या है, स्टडीज क्यों की जाती हैं, राइट? ठीक है, तो इफ यू सी द ऑप्शंस, डायडेक्टिक इज व्हाट? डायडेक्टिक मींस इफ यू आर टीचिंग टेनिंग एनी थ्योरी, ठीक है, बट यू आर सेइंग व्हाट? गिविंग इंस्ट्रक्शंस प्लस मॉरल. ये ध्यान से रखना, ध्यान. इंस्ट्रक्टिव होगी और मॉरल होगी तो क्या हो जाएगा? डायडेक्टिव होगी, जिसमें आप मॉरल्स भी बताएंगे. मॉरल्स मतलब व्हाई वी आर
स्टडीइंग दिस, तो वो बोल रहा है कि आफ्टर ऑल इफ लाइफ इवॉल्व ऑन अर्थ मींस इसको ह्यूमंस से, इस स्टडी को ह्यूमंस से कनेक्ट भी कर रहा है, तो इट इज व्हाट डायडेक्टिक हो सकता है ये। इंस्ट्रक्शनल केवल ओनली इंस्ट्रक्शंस गिवन हो, ठीक है। एडिफाइंग मींस व्हाट, यहां पर मॉरल तो रहेगा ही, ठीक है, इंस्ट्रक्शन भी रहेगा, ठीक है, बट एक चीज और रिक्वायर करता है, ये क्या, इनोवेटिवनेस, राइट डाउन इनोवेटिवनेस। इसमें कुछ न्यू कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, किसके लिए, एडिफाइंग के लिए। मॉरलाइजिंग हम जानते हैं केवल मॉरल्स बताए, तो अगर मैं इंस्ट्रक्शनल और मॉरलाइजिंग को एलिमिनेट कर दूं तो हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द आंसर इज बिटवीन ए एंड सी। मुझे बताओ एडिफाइंग होगा या डायडेक्टिक, दोनों ही टीचिंग के लिए हैं, एडिफाइंग होगा या डायडेक्टिक? इट इज व्हाट, द आंसर इज एडिफाइंग or didactic. Let's see the answers. Ketki said C. Yes. Kushwinder Kaur is saying C. Yes. Very good answer. The correct answer is what? Edifying. Why? Because it is what? It is including a new innovative concept called this one, right? ठीक है, अगर कोई न्यू ना होता, मैं न्यूटन्स थ्योरी से ही अपनी कॉन्सेप्ट को रिलेट करता लाइफ से, ह्यूमंस की लाइफ को, तो इट वुड बी व्हाट, लाइक डायडेक्टिक। लेकिन अगर आपने कुछ नया कॉन्सेप्ट बताया और उसको समझाया भी कि व्हाट इज इट, जैसे न्यूटन्स लॉ बोलता तो मैं न्यूटन्स लॉ बताने थोड़ी लगता कि व्हाट इज न्यूटन्स लॉ, ये तो बहुत ही पुराना पैटर्न है, राइट, वेरी फेमस थ्योरी। तो ऑलरेडी डिस्कस थ्योरीज, वो अगर बताया जाए, कुछ भी इनोवेटिव या क्रिएटिव ना हो, तो इट कैन बी डायडेक्टिक। और अगर कोई इनोवेटिवनेस मिल जाए, न्यू एलिमेंट मिल जाए, देन इट वुड बी व्हाट, एडिफाइंग। तो एडिफाइंग इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। जस्ट रीड दिस। मुझे पहले ब्रॉडर कंटेक्स्ट बता दीजिएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, देन वी विल डिस्कस द टोन्स। Okay, it is negative. पूरा पढ़ लिया? ओके, नेगेटिव। देखिए, इट इज पॉसिबल समटाइम्स कि मैं किसी बहुत सीरियस इशू को बहुत ही लाइट वे में रिप्रेजेंट करूं, हंसी मजाक से करूं, तो इट इज व्हाट, नेगेटिव। मैं ह्यूमर क्रिएट करूं, हंसी आए लोगों को, बट बहुत ही सीरियस इशू तब भी, राइट, ठीक है, तो इज इट नेगेटिव, उसको नेगेटिव में लोगे। जैसे इफ यू फोकस ऑन द फर्दर पार्ट मींस व्हाट, फर्दर पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, तो नेगेटिव होगा ये। लेट्स सी, एवरीबॉडी नोज दैट द रियल प्रॉब्लम, जैसे स्टार्टिंग में ही आपने अगर प्रॉब्लम देख लिया, तो हाँ आपका जो कॉन्टेक्स्ट जाएगा दैट वुड बी व्हाट, नेगेटिव, कि भाई द रियल प्रॉब्लम विथ इलीगल ड्रग्स इज दैट दे कॉस्ट टू मच। तो द रियल प्रॉब्लम इज व्हाट, द हायर कॉस्ट ऑफ illegal drugs, ठीक, and they are so difficult to get that drug addicts need to commit crimes in order to feed their habits। यहां तक जो है, यहां तक मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि इट इज व्हाट, नेगेटिव, ठीक है। ध्यान से सुनना, कैसे हम डिसाइड करते हैं, कैसे हम पिक करते हैं ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ टोन, ठीक है। यहां तक नेगेटिव है, आई डू एग्री विद दैट, कि भाई जो एडिक्टेड पर्संस हैं, इन ऑर्डर टू गेट देयर सेकंड डोज दे कमिट व्हाट, क्राइम्स, क्योंकि भाई उसका कॉस्ट पाएंगे कहां से, तो क्राइम ही करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज इलीगल और वेरी कॉस्ट, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मतलब वेरी हाई, वेरी स्टुपेंडस। तो क्या होगा, हाँ अपनी हैबिट्स को फीड करने के लिए, हाँ दे आर कमिटिंग क्राइम व्हिच इज बैड, नेगेटिव, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इफ ओनली पीपल कुड गो टू डाउन टू द नियरेस्ट 7-Eleven एंड बाय अ कोकेन स्लर्पी और ड्राइव अप टू द window at McDonald's and order a crack burger. Now, have you seen McDonald's crack burger? Crack burger कहीं देखा आपने? If anybody is ordering crack burger, so it is what? It is humor. It is a part of what? Humor. Crack burger और आगे दौड़ो. And a marijuana shake, people wouldn't need to knock down an old lady and grab her purse or
commit a home invasion robbery. Around $66 billion a year is spent on illegal drugs. Author is saying what? It is what? It is helping the economy also. Helping the economy also means what? In terms of money. Okay, but it is what? It is a humor. Why? Because before this part I was discussing, it is creating a bad impact towards society in terms of committing crimes by the addicts. Now what? This shows that illegal drugs are substantial portion of the Canadian economy. अब मैं अगर ये बोलूं कि कैनेडियन इकोनॉमी का बहुत ही सब्सटेंशियल पोर्शन है कौन? इलीगल ड्रग्स, तो मैं टॉन्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ह्यूमर नहीं क्रिएट कर रहा हूं, मैं ह्यूमर क्रिएट कर रहा हूं. एंड इफ आई एम क्रिएटिंग ह्यूमर, जैसे मैंने एक पॉइंट बोला कि कैनेडियन इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है, तो जब आपको ह्यूमर भी मिल जाए सेम पैसेज में, तो नेगेटिव प्लस ह्यूमर, नेगेटिव प्लस न्यूट्रल क्या हो जाएगा? ओवरऑल इट वुड बी व्हाट? न्यूट्रल. इट वुड बी व्हाट? न्यूट्रल. ठीक है, न्यूट्रल हो गया. नाउ व्हेन इट इज न्यूट्रल, सी द ऑप्शंस. तो अब एक्सट्रीम नेगेटिव, एक्सट्रीम पॉजिटिव वुड बी व्हाट? एलिमिनेटेड. नाउ इफ यू सी द फर्स्ट वन, डेस्परेट, डेस्परेट इज न्यूट्रल बट इट इज नॉट सुटेबल हियर. डेस्परेट मींस व्हाट? किसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो जाना, यहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं. गॉन. cynical, cynical is pure negative, gone. cynical means what? Skeptical, being doubtful about others, cross. sanguine, sanguine is pure positive, means optimistic को क्या बोलते हैं? sanguine, right? optimistic, right? now तो अगर ये pure positive it is gone. the remaining option neutral, which is neutral is what? satire. ठीक है, और मैंने आपको पहला भी बताया था कि satire is what? satirical is what? satire means when you create humor in terms of what? expectation. when you are having expectation from others, then you are creating humor. ठीक है, तो yes, you are saying that it is increasing, developing, or it is having a strong contribution in the economy of Canada. एक तरफ ये भी बोल रहा है और कह रहा है कि क्राइम भी बढ़ा रहा है. तो it is what? you want something from government कि आप government कुछ steps ले to curb this problem, right? so the correct answer would be satirical, right? so for today, thank you so much. We will meet in the next class. Thank you.